For updated NEET syllabus, two diseases are added, that is dengue and chikungunya. In that, first we are going to discuss dengue. Which is pathogen? Dengue is a viral infection caused by the dengue virus. In short, it is called as a DENV. And remember that it is a RNA virus. Now symptoms, first is high fever, then pain behind the eyes, muscle and joint pain, nausea, vomiting, swollen glands, दैट मीन्स जो नेक एंड ग्रॉइन रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आती है, एंड मेजल्स लाइक रैश अपीयर्स ओवर द चेस्ट एंड अपर लिम्स. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टी mosquito, which is also the vector of the disease. MCQs, first, dengue is transmitted by, option B is correct answer, Aedes mosquito. Second question, common symptoms of dengue, answer is B, fever, headache, severe pain behind the eyes, which is the characteristic symptom of the dengue. Now next question, dengue severity can lead to, करेक्ट आंसर इज बी, डेंगू हेमोरेजिक फीवर. सीवियर केसेस में क्या होता है, पेशेंट में ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, प्लेटलेट काउंट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ऑर्गन फेलियर होता है, एंड पेशेंट कैन गेट डाइड ड्यू टू दिस हेमोरेजिक फीवर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंगू शॉक सिंड्रोम. नेक्स्ट दिस इज चिकनगुनिया. पैथोजन, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द चिकनगुनिया virus and it is also RNA virus. Now symptoms, the most common symptoms are fever and severe joint pain, which is the characteristic symptom of the chikungunya. Other symptoms include headache, muscle pain, then joint swelling, fatigue, that means patient को weakness आता है, और measles like rash जो है कुछ patients में chest और upper limbs पे develop होती है. Mode of transmission, chikungunya virus is also transmitted to human being by the bite of infected female Aedes aegypti mosquitoes. MCQs, first, chikungunya disease spreads through the bite of which mosquito? Correct answer is A, Aedes aegypti mosquito. Second question, hallmark symptom of chikungunya is, correct answer is B, severe joint pain. Last question, chikungunya is commonly found in, answer is B, Africa and Asia.